और आज हमारे साथ है मिस्टर धीरेन्द्र यादव सर जी, जो कि एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है सेंट्रल फॉरेंस साइंस लेबोरेटरी में। और सर को 20 इयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर का है फॉरेंसिक साइंस में। सर ने एमएससी आईआईटी से किया है रुड़की से, और सर पीएचडी है जेनेटिक्स में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर आज हमारे साथ आए हैं और हमें टाइम दे रहे हैं फॉरेंसिक साइंस इस सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। तो वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच कि आज आप जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू मैडम। सर मैं ये समझना चाहती हूँ कि जैसे एआई है, टेक्नोलॉजी है, ये सब जगह आज बढ़ रही है और अलग अलग प्रोफेशंस में चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। तो फॉरेंसिक साइंस में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ पहले होता था, आज क्या है, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में वो कैसे आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी को? Okay, technology is integral part of forensic science. It is mainly the applied portion of any technology which is being used by forensic scientists. Those things which are already established in different fields of their specialization, like biological sciences, audio, video, or those are being when they are well established as a technology or as a tool, then they are accepted and used by forensic scientists. And challenges as the this technology advances, challenges for forensic scientists will also, there is both things, like हम उसका बेनिफिट भी रहेगा और उसका डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट क्या है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने से कम टाइम में और मोर रोबस्ट डाटा मिलेगा। चैलेंजेस किस फील्ड में बढ़ेंगे, लाइक डिजिटल फॉरेंसिक, we will get different kind of cyber frauds, and those things will further increase. And in our field, like in DNA profiling, with advance in technology, we can get even more sophisticated outcome from a particular sample, like more useful outcome. Suppose earlier we were getting only individualization, like we were fixing only which person has provided a particular biological fluid at a crime scene, right? Like if semen detected at a crime scene, or cigarette butt or something saliva detected on some exhibits at crime scene, we were able to find out out of provided suspects that which person was there, right? If those samples of that suspect is provided to us, but with advancement now we can also identify it with the help of NGS. It is still in the research phase, that we can identify which kind of person was there, features of a particular person, color of particular person, which is in variable population, especially like in US where Negro, Asian, or those kind of persons are there. So they can pinpoint like which kind of if suspect or accused was involved. So it is still going on, and in some cases they are using also. Right. And there is like one more technology. Earlier we were using only for saliva biological fluid detection. We used to have enzymatic and this enzymatic assay or immunological assays we were using earlier. Now we can have mRNA based methods also, which can be utilized for identification of biological fluids, which are more sophisticated. It is known as RNA profiling or mRNA profiling, or even miRNA profiling. Within that, we were in conventionally we are using DNA profiling only, जिसे DNA fingerprinting भी बोलते हैं। तो अभी क्या नया जो टेक्निक आया है, वो उसमें क्या है कि हमें डायरेक्टली एक ही सैंपल से एक ही प्रोसेस में हम डीएनए भी यूज कर सकते हैं। उसी जो आरएनए एक्सट्रैक्शन है, वो डीएनए एंड आरएनए डिफरेंट स्टेप में एक ही प्रोटोकॉल से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो अभी वो टेक्नोलॉजी कंबाइन करने से हमारे पास एक ट्रेस एविडेंस से हमें कई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लाइक अब अगर वो ब्लड है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या सिंपल किसी का मतलब नॉर्मल वीनस ब्लड है, that can be distinguished body, that can be identified with the help of mRNA profiling. So with advancement we will get more information from a collected exhibit from crime scene, but it is still a challenge for real case work. राइट। सो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काम तो थोड़ा इजी हो रहा है, मगर उसको भी अभी थोड़ा और टाइम लगेगा वाइड स्प्रेड यूज़ करने के लिए और फुल प्रूफ ये बोलने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी एडिक्वेट है, राइट? Yes, acceptance is the thing first. मतलब it is full proof, उसका एक population में already उसको study किया गया है, then we can utilize it as a tool in forensics. करेक्ट। और आपने जैसे बोला कि डिजिटल फॉरेंसिक साइंस, तो इसमें भी अब डीप फेक जैसी चीजें आ गई है। Yes, that is a big challenge.
या ये जो करना होता है डिफरेंशिएट कि इज इट रियल और इज इट एआई प्रोन, तो ये थोड़ा सा डिजिटल फॉरेंसिक साइंस में जाता है एंड आई थिंक वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है और बहुत जल्दी उसमें एडवांसमेंट हो रही है, राइट? उतना Yes, एडवांसमेंट एक्सेप्टेंस में हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, मतलब yes, लॉज में that आ will. रहे हैं इतनी जल्दी अमेंडमेंट्स। हाँ, ये चैलेंज रहेगा क्योंकि अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट स्पेशली काफी ध्यान दे रही है फॉरेंसिक्स पे, और उन्होंने कई रूल्स में चेंजेस किए हैं सो दैट आवर एविडेंस कैन बी इजीली कंसीडर्ड इन द कोर्ट। उसके साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है तो उसी हिसाब से चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। सपोज एआई आया तो हो सकता है हमारे पास एक ऐसा टूल आ जाए कि कोर्ट देमसेल्व्स कैन इजीली distinguish which voice is belonging to which person at real time basis, right? At present, but AI is again a challenge. They are creating even voice from the fake voice or fake video from of a particular person that can be utilized anywhere. So number of cases will increase initially, but with time I feel that this is the same thing if technology is provided in the court itself and suspect is going there with advancement. So a judge can distinguish some tools which can help. It is just a assumption, not not sure whether we will come, but I feel we will come with some technology that the court themselves can distinguish. But right, this is fake, this is true. So मैं समझना चाहती हूँ कि इस फील्ड में आने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी हमें सुन रहे okay, हैं। for a scientific post, these are usually recruited from UPSC, the Gazetted Officer post, under MHA, which are recruited in central government. They are recruited through Union Public Service Commission, either as junior scientific officer or as scientist B or senior scientific officer. So their educational essential qualification is MSc in relevant subject, along with 3 years experience, 3 to 4 years experience. But it is shortlisted based on more experience and more relevant qualifications. They will shortlist for interview. And one more thing which I want to give to the students, like if they are interested to go in biological sciences like DNA, biology, then they must have one basic subject. As of now, they require zoology, botany, or something in their graduation. They should have studied in all 3 years of their graduation these basic subjects, and only then they should go for a specialization. Like they are interested in forensic science, but वो अगर 12th के बाद से ही forensic science में चले जाते हैं तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है अगर उन्होंने ये तीनों साल में ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं पढ़े। लाइक अगर वो बायोलॉजिकल साइंसेज में जाना चाहते हैं तो उन्हें जूलॉजी या बॉटनी एज ए बेसिक सब्जेक्ट रखना होगा फॉर ऑल 3 years। अगर वो केमिकल साइंसेज में जाना चाहते हैं लाइक नार्कोटिक्स, एक्सप्लोजिव्स, और सो अगर उधर जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए तीनों साल। और अगर फिजिकल साइंसेज हैं जैसे फिजिक्स है, बैलिस्टिक्स है, उसमें जाना चाहते हैं तो फिजिक्स बीएससी लेवल पे भी तीनों साल होना चाहिए। एमएससी लेवल पे उनका सब्जेक्ट फिजिकल साइंसेज के लिए फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स रहता है, और केमिकल साइंस के लिए केमिस्ट्री है। जैसे अगर फॉरेंसिक साइंस स्पेशलाइजेशन अगर एमएससी में कर रहे हैं it is good, but if they are going at BSc level it may be disadvantageous if they have not studied these basic subjects for all 3 years. तो सर इसमें करियर पाथ क्या होता है? अगर कोई एंट्री लेवल पर आ रहा है तो क्या पोजीशन होती है और फिर आगे कैसे प्रोग्रेस, कैसे जैसे प्रमोशंस कैसे मिलते हैं? कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स देनी होती है या परफॉर्मेंस बेसिस होती है, कैसे होता है? जी, एंट्री लेवल रेगुलर पोस्ट एंट्री होता है दो तरह से। एक है एसएससी के थ्रू, जो अलग अलग रीजन्स के उसमें रिक्रूटमेंट होते हैं, वो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, साइंटिफिक असिस्टेंट या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल की। वो रिक्रूटमेंट होते हैं एमएससी प्लस एमएससी के बाद से। एमएससी के बाद वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं मोस्टली, एंड एग्जाम एंड देन इंटरव्यू के थ्रू शॉर्ट लिस्ट होते हैं। एंड देन ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है, दैट इज यूजुअली रिक्रूटेड थ्रू ईदर यूपीएससी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, like CFSLs, they recruit through unit UPSC, or for state governments FSL they recruit through Public Service Commission PSC of particular state. Or secondly, if it is a fresh candidate, these both as any scientific assistant as well as scientific officer post require at least 2 to 3 years experience. But that for getting that 2 to 3 years experience, most of the persons either join as a research scholar somewhere, or they are working as a research scholar, or nowadays there is contractual vacancies also which are just after MSc.
but it is also through a national level exam, knowledge fact. Uh, so by that exam and interview, they usually join and they get experience. Later on, they apply for higher post, and when they got absorbed as a post like scientist or junior scientific officer, then it is channel is open for them. Means it is internal promotion later on, depending on the vacancy in that discipline. और एक प्रोफेशन होता है, उसमें एक कोर स्किल्स होती है जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जैसे आपने कहा कि बायोलॉजी या फिजिक्स या जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आप फील्ड में जा रहे हो वो आपका होना चाहिए। ये एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, एक्सपर्टीज। पर सॉफ्ट स्किल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? जैसे हम मोस्टली प्रोफेशंस में देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ज़्यादा उभर कर आती है जो अच्छी होनी चाहिए। वैसे एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए सॉफ्ट स्किल्स कौन सी है जो उन्हें आगे सीखने में और बढ़ने में हेल्प कर सकती है? ये communication skills are always required almost everywhere, because you are going through interview, you will appear, you will face interview, but before that you should be aware about using various tools. Basic things required is the experimental knowledge of that particular field in which you are interested to go. Means you have studied, after your subject knowledge, you should have experience of working in some forensic lab or central forensic lab before entry into this. Even those persons who are working in pure research like institutes of CSIR, ICMR, they are eligible to apply, and they are equally competent. They are even more competent. We are working on basic basic on subjects, and if they are required and they enter in this field, they can perform well. And तो सर दिस वाज द पॉडकास्ट और आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, जो न्यू कमर्स इनके बारे में सोच रहे हैं या जो आ चुके हैं बट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? यही कहना चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस गेन करते रहें, अब स्किल्स गेन करें उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें वो जाना चाहते हैं। सब्जेक्ट के टच में रहें, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर वो किसी लैब में ज्वाइन कर लिए एंड बेसिक्स को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अपनी बेसिक्स को अवेयर रखें। एंड जो अभी भी जस्ट सिर्फ फॉरेंसिक साइंस सुन के आना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली 12th के बाद एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए बस एक सलाह है मैन कि वो यूपीएससी या उस पर गूगल पे सर्च करके किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें वो जाना चाहते हैं उसके रिक्रूटमेंट रूल्स को पढ़ें एक बार। वो मतलब उसमें लिखा रहता है व्हाट दे एसेंशियली रिक्वायर्ड, what qualification they desire should be desirable in particular candidate. Then it will help them, it will guide them what they have to do, like what subject they should choose at their graduation level, what subject they should choose at their PG level, and then where they should work for gaining experience, so that they can enter into this profession as a forensic scientist. मैं सारे दर्शकों से एक बार कहना चाहूँगी कि सर ने हमें ऑलरेडी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इसके वर्क नेचर के बारे में, एजुकेशन के बारे में। मगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे Sure, कॉन्टैक्ट I कर will. सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर करियर काउंसलिंग नीड्स। आप सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर का लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सर थैंक यू वेरी मच। आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए सच में बहुत इंसाइटफुल था। बहुत ऐसी चीज़ें Thank you, madam, for giving me opportunity and you're contacting me for this such kind of discussion. I feel good to make awareness among newcomers so that they should not face struggle later on. ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जैसे आप हो, इनसे जब आता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और कैसे उन्हें इसके लिए जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, Thank you. इतना टाइम हमें देने के लिए। Thank you. Always that.